HTML क्या है, XML क्या है, HTML. Now we will study about the designing part. So how we can implement in our HTML programming using CSS. तो CSS का basically introduction HTML के लिए ही हुआ है. I mean to reduce to enhance our like styling techniques using this particular language. So CSS में I think last time में I told you about what the big problem was and how it solved the designing part in HTML, because anyone knows क्या problem है, why we have it stands for cascading style sheet. Styling के लिए आपकी जो भी आपकी web pages में styles आप implement करते हो, style related to your font size, font color, background color या themes, जो भी आपको उसको center line या कुछ भी आपको उसको करना है, जो भी font से related changes या style से related. So for that we use CSS. Now CSS can be used externally. आपको एक external file से भी आप उसको use कर सकते हो. You can use it. So I'll tell you about the different types of CSS. So first of all, why should we use CSS? It is basically used for designing your web pages. You can lay out different type of variations or display techniques you can use. You can use the screen facing before CSS. So I also told you last class. So basically, अगर आपको, let's say for example, I gave you an example of a site where we have multiple pages, but same styling in different pages. तो अगर आपके पास 10 pages का कोई website है, and if you are using the same page background color or maybe the header, same heading color, same paragraph font and all, so instead of writing in those 10 pages, if we don't use CSS, अगर CSS नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उन all the 10 pages में आपको let's say जितने भी 10 pages में आपका अगर same page background color है, तो आपको उस page background color की coding उन 10 pages में individually आपको करना पड़ेगा. और you can say ये सारी चीजें इसको CSS this particular thing it must be visible to you. मैंने ये पहले भी आपको जब HTML में हमने किया था. So basically the highlighted portion is the syntax for writing CSS. So this is the rule of writing any CSS code. आपके पास एक selector होता है. Selector आपका HTML element आप बोल सकते हो. Like H1 is the header. H1 क्या है आपका header element है. That is the header tag of HTML. So first would be your selector, that could be the HTML heading or like HTML tag. Then in the curly braces, you will be writing the declaration. This is the declaration block. Selector and then the declaration block. So it's basically divided into two blocks. One is your selector block, another one is your declaration block. तो selector block में आपका जो भी HTML का tag में आप style implement करना चाहते हो, वो चीज आप वहाँ पे लिखोगे. Two properties. One is for the color of the text, another is for the font size of the text in heading tag. तो heading tag में आपने जो भी text लिखा होगा, उसका color blue हो जाएगा and font size जो है हम उसको 12 pixel में set कर रहे हैं. So this is the syntax. So you have to remember the syntax of CSS, how we can write CSS, and then you can implement the same करना है color, then colon, उसके बाद आपको value put करनी है. Then अगर आपको more than one attribute या property use कर रहे हो या उससे ज़्यादा भी और changes करने का paragraph tag के, तो आपको font size करना है या फिर आपको alignment करनी है, तो आप फिर semicolon से, तो जितनी ज़्यादा property आप इसको लिख सकते हो इसमें, that has to be separated by semicolon. So property and values has to be separated by colon. एक property and value, उसके बाद semicolon, the second property colon, the second property value, फिर आप colon दोगे. So is it clear? So this is the rule of writing CSS. Selector and then ये जो curly braces है ये आपका declaration block. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. उसमें एक ही लाइन में लिखा हुआ है that has to be enclosed within curly braces. आपने यहाँ curly braces नीचे लिख दिया है, इसका मतलब है वही ऊपर वाली लाइन. ठीक है, तो इसमें पैराग्राफ के लिए चेंज हो रहा है. दिस इज योर HTML selector tag P.
और आपने उसकी ये आपने उसका स्टाइलिंग रखा हुआ है, तो आपके पेज पे जितने भी पैराग्राफ टैग यूज हो रहे होंगे उन सब का जो है इस पर्टिकुलर ये इतने से कोड से आप जितने भी उस पूरे लेट से आप 100 पेजेस का आपके पास कोई 100 पेजेस की साइट है, और अगर आपने एक ही पैराग्राफ इस सेम जिसकी स्टाइलिंग आपको डिफरेंट पेजेस पे आपको देना है, तो दिस आपको 100 पेजेस के लिए सिर्फ इतना ही कोड आपको लिखना है, दैट्स ऑल। और इस कोड को आप उन 100 पेजेस के साथ कैसे हम अटैच करते हैं वो आपको मैं बताऊंगी, बट दिस सिंपल वन लाइन आपके पास इंडिविजुअल क्लास किसी पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल वो जो मैं अभी आपको बता रही थी, फॉर एग्जांपल आपके पास पैराग्राफ टैग है, एक पैराग्राफ टैग है, आप चाहते हो कि एक में मेरा एक पर्टिकुलर ये वाली स्टाइलिंग चल जाए और दूसरे में मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट देनी है या कलर ब्लू देना है, तो उन दैट पर्टिकुलर केस आप उस केस पे क्या लोगे, क्लास डिफाइन कर देते हो लाइक दिस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस कोड आपको ये जो कोड है ये आपको अपने HTML पेज पे लिखना होगा, और क्लास आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, आप यू कैन राइट योर नेम आल्सो, बट यू हैव टू बी लिटिल बिट मीनिंगफुल आप यूज करोगे कोई, फॉर एग्जाम्पल सेंटर लार्ज, तो सेंटर लार्ज इज डिफाइनिंग दैट योर टेक्स्ट मस्ट बी लाइन सेंटर एंड द टेक्स्ट font might be large, something like that, or you can simply write down the class, okay। इससे आपको क्या दिख रहा है कि ये H1 आपका एक हेडिंग टैग है, उसका ये स्टाइल है, देन यू हैव H2 इज अनदर हेडिंग टैग, उसका ये स्टाइल इम्प्लीमेंट है, दिस इज योर पैराग्राफ टैग और ये उसका स्टाइल है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन द CSS स्टाइलिंग। और इसको अगर आपको सेम स्टाइल यूज हो रहा है सारे में तो आप इस तरीके से ग्रुप कर सकते हो। सो दिस इज हाउ ग्रुपिंग ऑफ CSS इज कॉल्ड, इज H1 H2। सो इसमें ये तीन सिलेक्टर्स में आप देख रहे हो इसका सेम स्टाइलिंग यूज हो रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट इज सेंटर, कलर इज रेड, टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर H2 हेडिंग इज आल्सो सेम, देन फॉर पैराग्राफ इट्स अगेन सेम। तो जहां पे भी आपका सेम स्टाइलिंग यूज हो रहा है तो उस केस में आप जो सिलेक्टर्स हैं, दिस इज माय सिलेक्टर 1 H1, दिस इज माय सिलेक्टर 2 H2, दिस इज माय सिलेक्टर 3 पैराग्राफ। तो इन तीनों को आप ग्रुप कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन ग्रुप इट बाय यूजिंग कॉमा, तो H1 कॉमा H2 कॉमा P लाइक दिस, ठीक है। नाउ कमिंग टू इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं कैसे करते हो, एंड before ending your comment you will use asterisk first and then the forward slash, is it clear? So this is the comment portion। अगर आपको multiple lines में करना है तो जितनी लाइन के बाद comment end करना है वो लास्ट में आप दोगे, सिंगल लाइन में करना है तो आप सिंगल लाइन में ही आप end कर दोगे। So just for user or when a browser reads a style sheet it will format the HTML document according to the information in the style sheet. Now one is your internal style sheet and third one is your inline. Okay, now what is the difference between all these three? All the three आपके जो तीनों types हैं they are all three are used for inserting CSS in your HTML document, या CSS के लिए ही तीनों हम use कर रहे हैं, but there has to be a basic difference। The only difference is likewise we save HTML document with .htm or .html. You will save XML document or XML file as .xml. Similarly, you can save CSS with .css. Okay. So first I'm writing an HTML program. Let's say simple हम लिखते हैं इसको. I'm not using head or title. Simply using body. Okay. Let's say this is the body part. Now, okay, I'm not doing. Let's say this is my paragraph. इतना सही है, इसको लिखते हैं पहले और एक हेडिंग टैग ले लेते हैं CSS
save as will this. So let's say this is first. Yeah, yeah, I have simply designed a HTML page. जिसमें I have used two tags. One is your heading tag. This is CSS inline CSS. Can anyone tell me inline CSS क्या होता है? I think ये last class में जब हम style tag use कर रहे थे, then I told you about inline CSS. The CSS that you will be using within the HTML tag only. For example, here you can see this one. This is the inline style sheet. तो inline का CSS क्या होता है? जब भी आप within the HTML element inline means within the HTML element अगर आप कोई style use कर रहे हो, that is called your inline CSS. For example, this is my heading tag, and here we are using this particular styling that we are using within the element itself. So this type of CSS is called inline CSS. Okay. So style tag हमने use किया, इसमें style attribute use किया, tag नहीं, sorry, attribute or property you can say. So H1 is our HTML element. ये हमारा HTML element हो गया, और you can say selector. उसके बाद हमने इसके अंदर style attribute use किया HTML element के अंदर, और इसका जो भी हमने स्टाइलिंग सेट करना है हेडिंग टैग के अंदर, वी हैव सेट लाइक दिस. ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं एंड आई विल रन इट. Okay, so this is the CSS that I have implemented. This is called your inline CSS. Is it clear? Inline CSS ही उनको incorporate करते हो within the element itself. That type of CSS is your inline CSS. Now, what is that? Internal CSS head tag of your HTML. आप उसको head tag के अंदर within the style, आप style tag भी आप लेते हो. Now you head under the head tag only or tag. Okay. Save our time. So this particular alignment is just for your understanding, so that you can come to know where my tag is ending, or up easily. Someone is joining. Use this particular style tag for using your internal CSS. So internal CSS, you have to remember, it can be implemented inside the head tag only. और कहीं आप use नहीं करोगे इसको inside the head tag of your HTML page. So let's say इसको हम हटा देते हैं styling को, और क्योंकि हमने पेज बॉडी के अंदर करा है, ये H1 इससे क्रिस क्रॉस हो जाएगा, because I am using H1 here different style. और let's say इसको रन करके देखो अब क्या होता है. ठीक है, ये तो चेंज नहीं हुआ, ये पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया. ठीक है, तो दिस शोज दैट इट्स वर्क. इसको 100 करते हैं, ये और शिफ्ट हो गया. सो दिस मार्जिन लेफ्ट मींस इट विल लीव द स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन. वैसे ही मार्जिन राइट भी होता है. आप राइट साइड से अगर कोई स्पेस छोड़ना चाहते हो, देन यू कैन यूज मार्जिन राइट. मार्जिन टॉप भी होता है, ऊपर से टॉप, अगर आप टॉप से ऊपर करना चाहते हो. सो देयर कुड बी मेनी, but this is the way you can use internal CSS. Is it clear everyone? Inline और internal समझ आ गया आपको? Yes.
Yes, ma'am. So any doubt in inline and internal CSS? दो CSS cover हो गए आपके. एक है आपका inline जो आप within the HTML जो भी element है उसके अंदर ही लिखते हो. अगर मैं इसको undo करती हूँ, okay, I'm in notepad so that's why I can undo more. ठीक है. तो H1 के अंदर हमने with style tag जो यूज किया था, that is your inline CSS. Whoever has joined now, just for them. कोई भी एलिमेंट के अंदर जो लास्ट क्लास में HTML पढ़ते समय आपको आई थिंक ये हमने कर चुके हैं ऑलरेडी. सो दैट वाज योर इनलाइन CSS. नाउ अब जो न्यू हमने स्टडी किया आज, दैट इज योर इंटरनल CSS. और इंटरनल CSS हैज टू बी लाइक असाइंड और हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द हेड टैग. और हेड टैग के अंदर भी आप एक अलग से स्टाइल टैग यूज करोगे. दैट हैज टू बी अंडर स्टाइल टैग ओनली. डायरेक्ट विदाउट स्टाइल टैग आप लिखोगे तो इट विल नॉट वर्क. यू हैव टू यूज स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल टैग आप बनाओगे उसके अंदर. देन आप जितने भी आपको the way of writing your CSS syntax will be same. You have to write down the selector, that is your HTML element, that is your body. ये body tag है. उसके बाद आपका declaration block आ गया, that is the syntax I'm talking about CSS का. So in declaration block, this is your background color is your what? Property. And कोलन, उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू क्या पुट कर रहे हो वो, एंड दैट हैज टू बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. अब आप बॉडी, ये बॉडी में हमने किस में किया है, तो हमारा सारा टेक्स्ट जितने भी बॉडी में है वो सेंटर लाइन हो जाएगा. Did you notice what all the text has been shifted to the center of the screen? So CSS और जो भी आपने, because मैंने बॉडी के अंदर डाला है तो बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, बॉडी इज आवर एंटायर पेज. बॉडी टैग में सारा पेज की कोडिंग हम करते हैं ना. तो बॉडी टैग के अंदर अभी मेरी कोडिंग सिर्फ दो ही चीज की है. वन इज माय हेडिंग टैग एंड अदर इज माय पैराग्राफ टैग. सो ये दोनों में जितने भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑल दैट टेक्स्ट इज सेंटर अलाइन. सो दिस इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज सेंटर. Similarly, H1